Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to reconsider or rethink the dynamics of power in the modern world. आप लोग शायद जानते हो निकोलो मैकियावेली को, जो कि 16वीं सदी ईस्वी में एक फ़िलासफ़र गुजरे हैं, नोन प्राइमरली फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। ख़ास तौर पे उनकी एक किताब जो ग़ालिबन उनकी वफ़ात के बाद शाया हुई थी, द प्रिंस। ये तो बहुत ज़ुबान ज़द आम रहती है जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। आज की जो गुफ्तगू है वो उस किताब के मुकाबिल एक नया आइडिया या एक न्यू मॉडल ऑफ लीडरशिप होगा दैट इज़ रूटेड इन विजडम, एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, मूविंग अवे फ्रॉम मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जूम पे वकास आवान। वकास जो है उनकी MBA है फ्रॉम IMD बिजनेस स्कूल विच हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन यूरोप इन 2024। मोर ओवर आपकी अंडर ग्रेजुएट जो है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो है फ्रॉम गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट, लॉ की डिग्री भी रखते हैं। एंड वकास हैज़ ओवर 15 years of experience, hands-on experience at major corporations such as Amazon। आपकी हाल ही में किताब शाया हुई है जिसका उन्वान आप मेरी पुश्त में बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, पावर ऑफ सेज एंड एंटीथेसिस टू मैकियावेलियन प्रिंस। तो वकास हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अमजद नज़ीर साहब जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। आज के सेशन की मॉडरेशन और जो आपस में इंगेजमेंट होगी इस किताब के आइडियाज़ के ऊपर, अमजद नज़ीर उसको होस्ट कर रही हैं। मुख्तसर सा तारुफ में करवाता जो अमजद नज़ीर हेड्स द अल्टरनेट डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इन इस्लामाबाद, इज़ अ सोशल एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर एज वेल एज ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल राइट्स डिफेंडर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन मौज़ूआत पे अच्छी नज़र रखते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कन्वर्सेशन, गुड क्रिटिकल कन्वर्सेशन। लेकिन आप लोगों की शमूलियत के बगैर ज़ाहिर है कि वो गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी। सो आप इंतज़ार कीजिएगा जब हाउस ओपन हो फॉर Q&A। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। उसके बिना प्लीज़ ना बोलिएगा क्योंकि फिर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक और वकास साहब तक भी नहीं जाएगी। और उससे पहले छोटा सा एक काम कीजिए कि अपने सेल फोन जो है वो काइंडली आप साइलेंट मोड में कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। एंड दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम अमजद नज़ीर एंड ऑन जूम वकास आवान। थैंक यू। शुक्रिया नैयर और शुक्रिया ब्लैक होल। सॉरी कुछ मुगालता हुआ, कुछ मेरी वजह से ताख़ीर हुई। आई एम सॉरी फॉर दैट बट देयर वाज अ रीज़न। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर बेसिकली, and power is and has been a fundamental question to the historians, political scientists, social scientists, anthropologists, sociologists, and all in the sundry. What is power? What is the structure or form of power, or how many structures or forms of power have been there? How power is accumulated? How is it exercised? Who is legitimate enough to secure power? And what are multiple forms and structures as well as substance and consequences of power? It has been a historic question and people have been asking that question to themselves. As Nayyar just mentioned, the students of political science as well as the students of history have always been scratching their heads about this question. So this is our subject today, as you can see on the board. Power of Sage, an antithesis to Machiavellian Prince. This book has been authored by Waqas M. Awan, as has just been introduced by Nayyar. It's one of the very interesting books that I have ever read, I must say, about power, the analysis of power, the trajectory of power, and how it is accumulated as well as encountered with other forms of power. And Waqas M. Awan has indulged or tried to
build or explore the landscape of power right from ancient times down to medieval times and the modern times, obviously. So he begins with a well-known form of power, right and wrong, that was Plato's philosopher king, or Plato's republic, a kind of utopian king or the man of power, who believes that a king must be knowledgeable to legitimately exercise power, and without knowing enough about his societal needs and preferences, it's very difficult to exercise power or exercise power in a just and humane manner. Then he comes down to the 16th century political analyst and in a way activist of who introduced his book was The Prince. And Prince is a tyrant. He uses his power heavy-handedly, and he believes that, as we say in Urdu, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है. So power is evil, mean, exploitative, and to the verge of eliminating one's enemy. So this is the prince, the oppressor, one of the dictatorial forms of power that he introduces. And then one of the forms of power that we are familiar with, and that philosopher is also famous across the world, and that is Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche believes that a man who can exercise power or who is in a position or capable to exercise power must be an Ubermensch or a Superman. In इकबाल्स लैंग्वेज वो उसको इकबाल का शाहीन होना चाहिए, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना. तो उसको हर अंदाज में अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए, बट ही शुड बी बियॉन्ड और अबव द ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर द स्टेचर ऑफ अ मैन. अब इस जो फॉर्म्स ऑफ पावर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि पावर जो है वो एक वन वे और द अदर it's a characteristic which is beyond the qualities or behavior of an ordinary man, and this is how the power has always been defined. And Waqas Awan identifies this trajectory from ancient civilizations to the medieval Western and non-Western, that is Asian and African civilizations, and down to modern times, Western democracy and the current forms of devolution, current forms of democracy and dictatorship as well. What is interesting, as it is stated in his subtitle, an antithesis to Machiavellian Prince. So he introduces the idea of a sage, quote-unquote sage, and sage is a person who is driven by ideology, and his survival instinct or survival needs are pretty limited, and he is indifferent from his own survival, and he is willing to give his life to materialize or realize his ideal form of power, and which he presents as an antithesis to the power. And as he rightly says that there have been multiple forms of power, let's say competitive form of power, then compromising forms of power, then collaborative forms of power, then such as bureaucratic forms of power or corporate forms of power. While going through multiple forms of power, he admires and appreciates or tries to put forth his thesis of a powerful man, that is of a sage, as a metaphor. He has got very different characteristics or qualities to exercise power, which challenges the historical belief
perceptions as well as definitions of power. So it's an elaborate book of roughly about 175 or 200 pages. Somewhere some of the person have said that it is an encyclopedia of power. So I will request him to, not to elaborate a lot about his earlier or traditional forms of power, because the august audience might be familiar with this form of power. I will urge him to elaborate and interpret more the form of power that is his thesis and a sage, an antithesis to Machiavellian Prince. And I will also request him to try relating it with our parts of the world, that is the subcontinent, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. How, and Afghanistan, how power is or has been exercised here, and what is the crisis of power in our society or in neighboring countries, and how we can wade through this all these crises and problems, and what would he suggest is going to be helpful to pull Pakistan in particular or certain other countries out of this crisis. So I will request him also to confine his talk or interpretation to 25 to 30 minutes, so that audience could have sufficient time to engage or interact with him and ask question to make this conversation or discussion interesting. Thank you. So over to Waqas Awan. Go ahead. Thank you very much, Amjad. And very nice introduction. और आपने किया ये है कि आपने already book को summarize कर दिया, तो you have actually taken words जो कि मैंने बोलने थे, तो and what we would do is I will try to make sure that this talk remains within 25 minutes. So before I start this presentation, I want to thank the Black Hole to invite me for this discussion. जब मैं डिस्कशन का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहली बात कि जब हम पावर को देखते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि पावर एक बड़ा डायबोलिकल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी ईवल है. गाइस लाइक लॉर्ड एक्टन जब वो ये कहते हैं कि जी पावर करप्ट्स, फिर जॉर्ज ऑरवेल जैसे बंदे जब पावर को रिडिक्यूल करते हैं, फिर हमारे जो एक्स आर्मी चीफ रहे मिर्जा असलम बेग, उन्होंने किताब लिखी हुई है कंपल्शंस ऑफ पावर, वो एक ऐसी एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं पावर की कि जैसे पावर एक टैबू है, एक ईवल है, या लोगों को करप्ट कर देती है. लेकिन मैं इस हाइपोथेसिस से एग्री नहीं करता. मैं समझता हूँ पावर इज अ वेरी न्यूट्रल फिनोमेना. पावर इज जस्ट लाइक फायर, यानी कि जो आग होती है उस आग से आप खाना भी बना सकते हैं, आप विंटर में अपने आप को गर्म कर सकते हैं, आग के और बड़े यूजेज हैं. लेकिन अगर वो आप पावर उस आग को कंट्रोल ना करें तो वो पूरा घर भी जला सकती है. इसी तरह पावर भी एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, और वो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान पे है कि वो किस तरह उस कॉन्सेप्ट को यूज करता है. वो अच्छाई के लिए यूज कर भी सकता है और बुराई के लिए भी. वो बड़ी फेमस सेइंग है कि इट इज नॉट द पावर दैट करप्ट्स पीपल, इट इज पीपल हु करप्ट पावर. तो पावर का जो जब भी कोई वर्ड आता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो लोग समझते हैं कि जी इट इज लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी इवल. आई डिस्प्यूट दैट हाइपोथेसिस. और यही मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अगले 25 मिनट में ये लोगों को, जो ऑडियंस है, उनको कन्विंस कर सकूं कि दे शुड स्टार्ट लुकिंग एट पावर इन अ वेरी डिफरेंट वे. इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं कि देयर इज अ स्टोरी, एलिगोरी ऑफ केव, जो प्लेटोस की रिपब्लिक जो बुक है उसमें लिखी हुई है. और उसमें स्टोरी कुछ यूं है कि इमेजिन करें कि प्रिजनर्स हैं जो कि एक केव में बंद हैं, एक गार में बंद हैं, और पूरी जिंदगी वो उसी केव में रहे हैं, और उनको बांधा हुआ है, और उनका मुंह जो है वो दीवार की तरफ है, केव की ओपनिंग की तरफ नहीं है, और उनके पीछे एक आग जल रही है, और गार्ड जो है वो पहरा दे रहे हैं. तो उनको अपना साए जो है वो सामने दीवार पे नजर आते हैं, और वो जब लोग बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि जो साए हैं वो बातें कर रहे हैं. तो उनके लिए पूरी दुनिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और उनके नजदीक यही जो केव होता है वो पूरी दुनिया होती है. और उनमें से एक प्रिजनर जो है वो निकलता है, और वो जाके बाहर देखना शुरू कर देता है दुनिया को. वो देखता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने रंग हैं उसके, कितने जानवर हैं उधर, कितने इंसान हैं, और लोग जो बातें कर रहे हैं वो मुंह से कर रहे हैं, वो साए बात नहीं करते. तो वो आदमी वापस आता है और वो प्रिजनर्स को बताता है, अपने फेलो प्रिजनर्स को, कि जी दुनिया तो बहुत बड़ी है. तो जब वो बताता है कि दुनिया बहुत बड़ी है,
तो लोगों को समझने में आना, वो जो प्रिजनर है वो कहते हैं कि ये जो बात कर रहा है ये गलत है, क्योंकि हमने तो जो दुनिया देखी है वो यही देखी हुई है। तो मैं भी जब इधर आया तो मैं भी आप लोगों को वो एक ऐसी चीज बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने देखी हुई है, कि मुझे ऐसा लगता है कि पावर हैज मैनी गुड यूजेस, पावर इज कैन बी यूज फॉर मैनी 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 गुड पर्पसेस। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब भी एक पावर को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन बायस का शिकार होते हैं कि पावर क्योंकि ईवल है, तो हम लोग ओनली जो ईवल साइड ऑफ पावर है वो डिस्कस कर रहे होते हैं विदाउट डिस्कसिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो over the next 25-30 minutes I'm going to try to explain you the political theory, though Amjad साहब ने कहा है कि जी explain ना करो, but I think I would like to go still give you the perspective why I want to how I reached it. तो जब भी किसी चीज को जब हम लोग इमेजिन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि एक स्पेसिफिक आप टाइमलाइन शुरू करें, एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करें, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम आगे चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा पाकिस्तान के अभी जो करंट हालात चल रहे हैं, कुछ लोग 2022 से उसका आगाज़ कर देते हैं, कुछ लोग 2018 से उसका आगाज़ करते हैं, कुछ लोग 2008 से करते हैं, कुछ 1947 से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में जब भी आप किसी चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए कट ऑफ टाइम लगाते हैं ना, या ड्रॉ लाइन एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग एनालाइजिंग इट, वो एक बड़ा क्रूड वे होता है एनालाइज करने का, क्योंकि दुनिया में कोई भी इवेंट जो होता है आइसोलेशन में नहीं होता, उसकी कॉन्टेक्स्ट होती है, उसका सियाको सबाक होता है, उसका डेफिनेट कोई कोई उसको उसको उसका कोई लीड होती है पीछे से। इसी वजह से जब भी आपने कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो ऑलवेज गो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एंड व्हेन आई से वेरी स्टार्ट आई मीन बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। आप लोग आई होप कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन है। I think just give me a second. Something has crashed. It's reloading. Pardon my laptop for doing that. We could see your screen. This is fine. We can see it. You can see it. Okay. Yeah. जो अब आपको नजर आ रहा होगा सामने जी। तो when what I was saying कि whenever you want to start, you have to start from the beginning of humanity. Beginning of humanity, क्योंकि हमें ये नजर आना चाहिए कि पावर के जो स्ट्रक्चर्स जो दुनिया में कायम हुए हैं उनका क्यों हुए, कैसे हुए, क्या वजह आई, व्हाट व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड। और इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो पावर का एक कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में बड़ा पिविटल हो चुका है, उसका आगाज कहाँ से हुआ। तो जब हम देखते हैं कि तकरीबन 2 से 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए दुनिया में। इससे पहले होमो सेपियंस दुनिया में नहीं थे। इससे पहले होमो इरेक्टस थे, होमो हेबिलियस थे, होमो निएंडरथल्स थे, जो होमोजीनियस से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग सब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया से खत्म हो चुके हैं, सिर्फ होमो सेपियंस बाकी हैं। और हम लोग 2 लाख साल पहले जब इस दुनिया में आए तो उस वक्त हम लोग वन ऑफ द वीकेस्ट मैमल्स थे। लाइफ वाज क्वाइट अ स्ट्रगल फॉर अस। और हम लोग जब 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 दुनिया में चलते थे तो हम लोगों को खतरा होता था बाकी डिफरेंट जानवर से, डिजीजेस से, और हमारे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो कि हमें एस कर सकती या हमें सरवाइव कर सकती। लेकिन और फिर उसके तकरीबन 1,30,000 साल बाद, यानी कि आज से 70,000 साल पहले, पीपल कॉल इट समथिंग कॉल्ड एज कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कि हम लोगों को जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वी स्टार्टेड एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वेरी वेल। वी स्टार्टेड मेकिंग आर्ट। हम लोगों के अंदर एक कॉग्निटिव चेंज आई जहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ देना शुरू कर दिया। और ये वो चीज थी जिसने एक्चुअली इंसानों को डोमिनेंट स्पीशी ऑफ द अर्थ बनाया। इससे पहले लाइफ वाज क्वाइट टफ फॉर अस। और यही वजह है कि जो पहले जो मैंने बात बोली, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलियस, होमो निएंडरथल्स, ये सब एक्सटिंक्ट होगी क्योंकि वो ये चीज नहीं कर सकी। ये जब हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बनाई तो वी स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर एट ए मैसिव मैसिव स्केल। और अब आप ये सोचें कि जो हमारे जो जंगल में हम जाते हैं तो हमारा जो क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है चिंपैंजी, जिसके साथ हम 99% ऑफ द डीएनए शेयर करते हैं, उनकी जो कॉपरेशन का जो साइज जो जंगल में से मैक्सिमम नजर आया वो तकरीबन 150 के करीब है। लेकिन होमो सेपियंस, हम इंसान जो हैं, वो थाउजेंड्स, मिलियंस, समटाइम्स इवन बिलियंस हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये हम लोग इकट्ठे होते हैं, दैट इज वेयर वी अनलॉक द पोटेंशियल। मसलन अब आप इंडिया और चाइना देखें, दीज आर द कंट्रीज व्हिच हैव अ पॉपुलेशन वेल ओवर अ बिलियन। और ये वहाँ पे जब कॉपरेट करते हैं, दे हैव एक्चुअली मेड देयर कंट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दी, टॉक करना शुरू कर दी, तो व्हाट हैपेंड
We unlocked agriculture revolution. No mammal on earth has the capacity to produce and control and grow their own food, but Homo sapiens has. Homo sapiens have been doing it for the past 12,000 years. फिर 500 साल पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके जहाँ पे वी आर एबल टू कंट्रोल एनर्जी, we can use energy to our advantage, and we can create energy, we can put energy to our own usage. And right now we are at the cusp of AI revolution जहाँ पे हम अपने decision making actually we are also be able to outsource it. We are now thinking of actually populating Mars. And this all happened because we were able to make vast association of people. हम लोग लोगों को इकट्ठा करके उनका उनका जो पोटेंशियल है वो अनलॉक कर सकते थे. लेकिन जब ये सब कुछ हम लोग कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया हम लोगों की जिंदगी में, और वो ये था कि इन वास्ट एसोसिएशन ऑफ पीपल को लीड कौन करेगा, हु विल बी द लीडर ऑफ दीज एसोसिएशंस. और हम लोगों ने इस सवाल के जवाब को तलाश करना शुरू कर दिया. अब आप ये सोचें कि ये सवाल इतना मुश्किल था कि किस किस्म का लीडर होगा, कि हम लोगों ने साइंस इजाद कर ली, हमने एटॉमिक मॉडल इजाद कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट which talks about these concepts, which is sociology, which is only 100 years old. ये after Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber type जो लोग आए sociologist, उन्होंने sociology की एक्चुअली पूरी फॉर्म बनाई. और 1905 में आप सोचे नील बोहर एटॉमिक मॉडल दे चुका था. वी हैड अंडरस्टूड हाउ टू एक्चुअली अनलॉक एटॉमिक एनर्जी. तो एटॉमिक एनर्जी हम लोग बनाने में समझने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज वर्क, हाउ वी एक्चुअली बीन एबल टू लीड इट. और जब हम लीडिंग की बात करते हैं तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज वी ओनली लुक एट हाउ वी लीड इट इन लीड. जब लीडर एक जगह पहुंच जाता है तो हमने नीचे देखना होता है कि उसकी पावर बेस क्या है. जब वो एक स्टेज पे पहुंच चुका है, वो स्टार्टेड लीडिंग इट, उसके बैकग्राउंड में उसकी पावर होती है. जब तक उसके पास पावर नहीं होगी वो लीड नहीं कर सकेगा. और अमूमन क्या होता है कि जब हम लीडरशिप को डिस्कस करते हैं हम लोग उसके ये बताते हैं कि वो उसके ट्रेड्स क्या हैं. वो कोअर्सिव लीडर है, वो विजनरी लीडर है, वो कोचिंग लीडर है. 6 डिफरेंट, क्योंकि मैंने खुद लीडरशिप का कोर्स किया है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टॉट, इज कॉल्ड एज गोल्डमैन 6 टाइप्स ऑफ लीडरशिप. ये हम लोग को ये चीज समझाई जाती है, लेकिन हम लोग को ये नहीं बताया जाता कि लीडर बनने से पहले उस आदमी की पावर बेस क्या है. और यही है कि जो अमजद साहब ने शुरू में बताया था कि देर आर 4 डाइवर्जिंग स्कूल्स ऑफ थॉट. इसके अलावा भी जैसे सुन त्जू ने आर्ट ऑफ वॉर लिखी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, फिर देर इज जेजी जो कि ताओइज्म में कॉन्सेप्ट है. there are other schools of power as well, but these schools of power neatly fit into one of these 4 models. और ये जो मॉडल्स हैं इनको अगर आप ब्रॉडली देखें तो आप एक्स एक्सिस पे इनको इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म और वाई एक्सिस पे नॉलेज वर्सेस आइडियोलॉजी पे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं. और जो जिसमें फिलोसोफर किंग है जो कि प्लेटो का था कॉन्सेप्ट, उसके जो एनिमल स्पिरिट है वो मैंने लाइन बताई है, क्योंकि जो लाइन होते हैं वो they know a lot about the jungle, they know where to find the food, they know when to hunt. और ये वो लोग होते हैं जो कि लीड करते हैं based on their wisdom, based on their knowledge, based on what their understanding is, based on their intellect. ये जैसे पाकिस्तान में बहुत से होता है ना कि आप जब जाते हैं गांव में तो वहां पे लोग मंजी पे बैठे होते हैं और उसके बाद अपनी हिकमत बता रहे होते हैं. These are the kind of people who can be called as a philosopher king, who tell people how to do things based on the knowledge and experience that they have. अब इसको जब आपने समझना है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, तो देयर इज नो बेटर एग्जांपल देन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ गूगल. We use Google a lot, and Google has a lot of knowledge about you. They know a lot of things about what you do, what are your characteristics. जब हम political life में देखें, there is no better example to explain philosopher king than Manmohan Singh. Manmohan Singh, the guy who actually made India the economic juggernaut that we are seeing today. 1991 में जब economic turnaround India का आया, तो Manmohan Singh was the architect of that. He was not popular. He was not at all. लोग उसको पसंद नहीं करते थे. जब उसने 91 में अपना जब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दिया तो देयर वर op-eds इन न्यूज़पेपर्स which were very anti मनमोहन सिंह. इनफैक्ट इतने अनपॉपुलर उसके डिसीजंस थे कि कांग्रेस लॉस्ट 1996 इलेक्शंस. लेकिन what he did based on his knowledge was extremely well for India. He managed to turn India around. लेकिन क्या ये is this the best way? मसलन ब्लैक होल जो है वो भी लोगों को नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है. But is imparting the knowledge the best way to gain power, to elevate the
the thing is like sometimes it is good but sometimes it can go wrong as well, because अगर philosopher king गलत हुआ तो who will be the savior? There is no hedging कि वो किस तरह आप उसकी जो pitfalls हैं उसको hedge कर सकते हैं. मसलन पाकिस्तान ने भी जो मनमोहन सिंह का एक्सपेरिमेंट इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने भी किया हुआ है. हमने 98 में शौकत अजीज को इकोनॉमी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था. What शौकत अजीज did, he put Pakistan on a path जहाँ पे आज हम रील कर रहे हैं with debt trap. We are reeling with consumerism. तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे साइन करनी है विदाउट डेवलपिंग आवर ओन इंडस्ट्री. तो इफ फिलोसोफर किंग फेल्स then what is the hedge? And that is why philosopher king, yes, answers many of the problems of power, how to erect power, but does not, it is not the foolproof. It has its own pitfalls. Let's move to the second one, Machiavelli, which is probably the most well read, जो लोग सबसे ज्यादा जो आइडियलाइज करते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी किताबें पढ़ी गई हैं, वो माकियावेली है. इनफैक्ट अगर आप अमेजोन पे जाएं तो आजकल मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे जो किताब है वो है 48 लॉज ऑफ पावर, जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी हुई है, विच इज वेरी मैकियावेलियन इन नेचर. और लोग जो हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बिलीव करते हैं कि आपको अपनी जो पावर इरेक्ट करनी होती है विद कनिंगनेस, विद ड्यूबियस मेथड्स, अपनी चालाकी से आपने लोगों को लीड करना होता है. और इसकी जो एनिमल स्पिरिट है वो मैंने जो बताया वो फॉक्स है. जिस तरह फॉक्स को पता होता है कि किस तरह मैंने चालाकी से अपने काम करने हैं, ये मैकियावेलियंस करते हैं. आप इमेजिन करें कि हेनरी किसिंजर, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, जो कि कोल्ड वॉर में, हेनरी किसिंजर वाज थ्रू एंड थ्रू मैकियावेलियन. आप जब अमेरिका का देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में जिस तरह उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशंस, फिर जिस तरह आर्म्स सप्लाई टू टेररिस्ट, ब्लैक मनी लोगों लेफ्ट राइट करना, ये सब चीजें हेनरी किसिंजर के दौर में, क्योंकि उनके लिए एंड वॉर एंड जस्टिफाइज द मीन्स. देयर इज नो एथिक्स, देयर इज नो मोरालिटी. आपने जो करना है वो आपने करना है, वट एवर इट टेक्स. दैट इज द मैकियावेलियन. और आज के दौर में जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखते हैं तो फॉर मी आई फील कि फेसबुक और मेटा इट फिट्स द बिल. क्योंकि फेसबुक ने जिस तरह 2016 में कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल आया कि जिस तरह यूएस के इलेक्शंस को लोगों का डेटा लेके 78,000 लोगों का इन्फ्लुएंस किया एक स्टेट में इलेक्शन, और जिसकी वजह से फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया. इट शोज कि आपने जब एक आपने सोच लिया कि मैंने XYZ करना है, तो आप उसको हासिल करने के लिए जो मर्जी करें वो आपके लिए जायज हो जाता है. तो ये दिस इज द सेकंड स्कूल. द थर्ड स्कूल इज उबरमांच, एक्सक्यूज मी. और इसमें मैंने जो एनिमल स्पिरिट बनाई है इसकी, दैट इज अ हॉक, एंड इट द ओनली रीजन इज बिकॉज अल्लामा इकबाल का भी जो जो खुद ही का नजरिया है, वो जो शाहीन है, वो एक्चुअली फेडरिक नीचे से निकला हुआ है. दो देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि उबरमांच और अल्लामा इकबाल की का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एसेंशियलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म का फर्क है. एंड आई कैन गो इनटू लॉन्ग डिबेट के जी दोनों में कहाँ पे फर्क आता है, लेकिन मोर और लेस फ्रेडरिक नीचे और अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस सेम है. और ये वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वी आर आवर ओन स्टैंडर्ड्स, वी वांट टू डू थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट वी फील इज राइट. उनके लिए इंडिविजुअलिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग. आप जब इसको रियल लाइफ में देखना पसंद करते हैं तो द बेस्ट एग्जांपल दैट आई सी इज दैट ऑफ एलन मस्क. अब एलन मस्क जो है वो जिस तरह टेस्ला चला रहा है, जिस तरह वो मार्स को वो रॉकेट लॉन्चेस कर रहा है, द गाय डज थिंग्स व्हिच ही लाइक्स टू डू. ट्विटर को खत्म करके एक्स बना देना, देयर आर फ्यू हु वुड लव इट द वेज एलन मस्क लीड्स, देयर आर फ्यू हु वुड हेट इट. लेकिन ये लोग वो होते हैं जो कि लोगों की केयर नहीं कर रहे थे कि लोग उन्हें क्या बोल रहे हैं, क्या सही है. उनके लिए जो खुद समझते हैं कि सही है वो वही उसी को फॉलो करते रहेंगे. और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखें तो द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ एप्पल इज ऑल्सो वेरी मच लाइक उबरमांच. एप्पल ने जब आज से मेरे 2-3 साल पहले लोगों को चार्ज करना शुरू कर दिया था कि आप $150 का अलहदा चार्जर खरीदते थे, लोगों ने बड़ा कहा कि जी आप $1,000 का पहले एप्पल बेचते हैं और उसके ऊपर $150 का मजीद ऊपर चार्जर भी चार्ज करते हैं. लेकिन एप्पल डिड नॉट केयर, दे केप्ट ऑन डूइंग इट. और फिर अब तो खैर लॉ यहाँ पे यूरोप में
लॉ चेंज करिए जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइज किस्म की चार्जर होंगे, तो जब वो अब उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू खत्म होगा, लेकिन एप्पल डिड व्हाट इट फेल्ट लाइक व्हाट वाज गुड फॉर देम। और इस मॉडल के जो पिटफॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आई एम सॉरी टू से कि अल्लामा इकबाल ने भी जब ये कॉन्सेप्ट दिया था तो द पिटफॉल्स वर नॉट रियली एविडेंट। मसलन हिटलर, मोसोलिनी, दे वर बिग फैंस ऑफ फ्रेडरिक नीचे। वो ये बिलीव करते थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो नीचे की जो डॉटर थी, शी वॉज एन एडवाइजर टू हिटलर। तो होता ये कि जब आप एक इंसान को बोलते हैं कि तुमने अपने स्टैंडर्ड खुद बनाने हैं, तो वो अगर गलत साइड पे निकल गया तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग दैम। और जिस तरह हिटलर के साथ हुआ, इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज अ वेरी क्या कहते हैं बॉटम्स अप से निकला, लोगों ने उसकी सपोर्ट की, लेकिन व्हेन ही सेट ऑन ए पाथ ऑफ बीइंग एन उबरमांश, देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग देम। और ये होता है। और ये मॉडल जो है ये हम दोबारा डिस्कशन में आएंगे, क्योंकि अमजद साहब ने शुरू में जो बात बोली कि पाकिस्तान में जो पावर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, कौन सा पावर मॉडल है, ये हमें इस नीचे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबली द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान लाई इन दिस पावर मॉडल। एंड नाउ आई कम टू द फोर्थ वन व्हिच इज माय फेवरेट, सेज, जो मैंने कॉन्सेप्ट जो दिया। अब ये जो सेज का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। ये स्टोइक फिलोसोफर्स ने सेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आर्थर शोपेनहायर ने सेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस हैज बीन डिस्कस्ड, बट इट वाज डिस्कस्ड एज अ वे ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज नॉट ओनली अ वे ऑफ लाइफ, it is a way where you can start actually erecting power as well. You can start bringing people based on an ideology, based on your collective. And that is why the animal spirit that I've put here is that of a wolf. Wolf होता है वो अपने पैक में होता है, वो जब पैक के अंदर रहता है वो सबसे ज्यादा डेडली होता है। जैसे ही वो पैक छोड़ता है वो, तो जो सेज होते हैं वो भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं। दे आर वेरी सोशलिस्ट इन द सेंस दैट दे ब्रिंग पीपल टुगेदर बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी, and that ideology becomes the driving force. And once they set themselves on the path of adopting an ideology, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनको ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। और वो जब उनको प्रिंसिपल्स ड्राइव करना शुरू होते हैं तो लोग आहिस्ता 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 उनके साथ आते रहते हैं until they become so big that they topple the status quo of the society. और ये वो लोग होते हैं जिनकी एथिक्स एंड मोरालिटी भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बंदा ये बोल सकता है कि हिटलर है वॉज ऑल्सो एन आइडियोलॉज, अल्ट्रा जर्मन नेशनलिज्म में बिलीव करता था। लेकिन व्हाट आई से इज कि जब आप एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, इफ इट हैज वन ऑफ द 4 पिटफॉल्स, जो कि मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड एज डार्क ट्रेडफेड मॉडल, अगर उनमें से 4 में से एक भी खाना टिक हो गया तो आप यू डू नॉट क्वालिफाई एज बिकमिंग अ सेज, यू क्वालिफाई एज समवन एल्स। क्योंकि आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स का काम ये होता है कि वो आपकी सोसाइटी की भलाई के लिए करें, वो कलेक्टिविज्म की भलाई के लिए करें, ना कि वो एक स्पेसिफिक तबके को, अपना जो ग्रुप है उनको एडवांटेज देने की कोशिश करें। वो अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को एडवांटेज देने की कोशिश करें तो दैट वोंट बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल स्टार, दैट वुड बी कॉल्ड एज समवन हु इज अ मैकियावेलियन wrapping themselves in the clothes of a sage. So this is the fourth model, and that is where I'm now why discussing all this was important, because this is the tone, this is the preface of the book कि मैंने क्यों यहाँ पे आया। क्योंकि मैंने बाकी जब 3 मॉडल्स डिस्कस करना शुरू किए तो मुझे उनके पिटफॉल्स नजर आना शुरू हुए, और जब मैं ये सेज लिख रहा था तब मुझे सेज के भी पिटफॉल्स नजर आना शुरू हुए। और इसी वजह से फिर मैंने आखिरी चैप्टर जो मेरी किताब का है, आखिरी 3 चैप्टर, उसमें मैंने एथिक्स एंड मोरालिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप वो एथिक्स एंड मोरालिटी के एलिमेंट निकाल दें तो फिर सेज also is one of the other 3 schools of thought which I disagree with. अब अगर आप you want to know what a sage is, then you can read any of the Stoic books. And if you want to know how a sage actually becomes powerful, what are the sources of power, what leads them to actually go on the path of power, then Power of Sage is already, I think, Nayyar, I've already given him the book. It is already in the library of the Black Hole, so you can go and read it. It is not a very lengthy book. मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया कि उसने एक दिन में पढ़ी है। तो if you want to know कि किस तरह ये पावर बेस चलती है, तो गिव इट अ ट्राई। इस बुक में मैंने जो डिस्कस किया वो ये है, सबसे जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई पीपल लाइक पावर। मसलन कैसेंजर जो है उसका वो बड़ा फेमस saying है कि पावर इज अ ग्रेट एफ्रोडीसियक, कि लोगों को क्यों इतनी हसरत होती है कि उन्होंने पावर चाहिए उन्हें। तो इस सवाल का जवाब बड़ा जरूरी होता है,
और जानना बहुत ज़रूरी था। और इस किताब के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि पावर इज़ एक्चुअली, हम लोगों की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें उन लोगों को पावर की ज़्यादा ज़रूरत है हु वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। दोज हु वांट टू रिमेन डिपेंडेंट, पावर इज़ नॉट फॉर देम। तो आप लोगों में से कोई भी बंदा अगर कोई नज़र है जो जिसको इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है, दे विल परसू पावर टिल द वेरी एंड। और आप यहाँ उन्हीं माशरों में देखेंगे कि लोग पावरफुल होते हैं जहाँ पे फ्रीडम ज्यादा होती है। जैसे फ्रीडम आप खत्म करते हैं, उनकी जो पावर होती है वो डिमिनिश हो जाती है। फिर मैंने बुक में ये भी एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है कि हु आर द लाइकली कैंडिडेट्स। मसलन अब जो ऑडियंस है, इसमें कौन से ऐसे लोग होंगे हु वुड एक्चुअली लाइक टू परस्यू पावर, कि ठीक है मैं पावर लेना चाहता हूं, लेकिन क्या डू आई रियली हैव द मेटल टू गो ऑन द पाथ ऑफ पावर। क्योंकि पावर हासिल करना सोसाइटी में इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। और लोग फिर जब पावरफुल होते हैं तो फिर किस तरह आप सोसाइटी को किस तरह कोलैबोरेटिव रखते हैं, किस तरह उसको उसको आगे लेके चलते हैं। इट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली एवर ह्यूमैनिटी हैज अंडरटेकन। और इसी वजह से फिर मैंने ह्यूमैनिटी को 4 खानों में तकसीम किया है, एंड आई एम कॉलिंग देम सेज, प्रिंस, स्लेव एंड मशीन। और बेसिकली मैं ये इसमें ये बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट इट इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन अ सेज एंड अ प्रिंस। प्रिंस वो होगा जो कि एक टायरेंट होगा, लोगों को दबाने की कोशिश रखेगा, अपने नीचे रखने की कोशिश करेगा। और सेज वो होगा who does not comply to the status quo, who does not like to remain within themselves. They want to go and change the society. Then there will be slaves who would just agree to whatever they are told. प्रिंस उन्हें जो बोलेगा, जो बताएगा, बोलेगा ये सही है, अफगान वॉर सही है, हम अफगान वॉर को सही कहना शुरू कर देंगे। हम कोई बंदा ये बोलेगा कि आज हम लोगों ने जो तालिबान है वो गलत है, तो हम सब बोलना शुरू करेंगे तालिबान गलत। तो slaves are those kind of people who would agree to whatever they are told. And then the fourth is the machine, is like जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो they are just neutrals, they will stay put, they would not do anything. So there are 4 types of humans that exist in a society। और मैंने इस बुक को इसके अंदर फिर एग्जांपल्स देके बड़ा लंबे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे ख्याल में इस बुक का जो सबसे ज्यादा जो मैं जिस पे प्राउड फील करता हूँ वो ये वाला चैप्टर है, जिसमें मैं ह्यूमैनिटी की जो 4 अकसाम है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I'm talking about corporate power. I mean, I'm sure some of you would be working in corporate world. अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसकी जो पावर होती है वो 3 बड़े तबकात होते हैं। क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, and I've worked in S&P 500 companies, so I understand that there are 3 big types of overarching strategies that the corporate world takes, and then everything just seeps down below. And I've talked about briefly about the corporate power as well. If someone wants to understand in deep, then like please send me an email and I will explain it to you. But in the book I've talked about it very briefly. Then the types of power, कि इंसान जो है जब पावर गेन कर रहा होता है वो किस तरह पावर को क्या कौन कौन सी एक्साम को वो यूटिलाइज कर रहा होता है। मसलन करिज्मेटिक पावर एक चीज होती है, ट्रेडिशनल पावर, रैशनल पावर, इंसेंटिव पावर। ये चारों जो 4 टाइप्स ऑफ पावर हैं, दे आर कॉल्ड एज अथॉरिटेरियन पावर। Then visionary and relational power, it is called as the influential power. Authoritarian power को आप hard power भी बोल सकते हैं और influential power को आप soft power भी बोल सकते हैं। These ये जो अकसाम है, ये 6 किस्म की, ये इंसान को जब ये यूटिलाइज करता है तो इससे बंदा पावरफुल होता है। फिर जब वो पावर ले लेता है तो हाउ दे यूज दैट पावर, हाउ व्हाट आर द पाथवेज ऑफ पावर, कि क्या वो अपनी पावर यूज कर रहा है विद ए कोलैबोरेटिव स्टांस, वेदर दे आर यूजिंग दैट पावर to force a compromise with some other entity, or whether they want to compete in a zero-sum game where they want to just eliminate the other guy totally. Then I've talked about the power game theory. Now, this is something we need to understand, that whenever we are in a power game, what really happens is if I do some move using my own power, the other person will retaliate. जब आप चेस खेलते हैं तो उसमें आप जब कोई मूव करते हैं तो opposition will also make a move. So what that move is, how to actually predict that. So अगर sage कोई move करता है, what are the kinds of things that you can expect from a prince, कि वो किस तरह की move वापस चलेगा। तो उसमें मैंने ये 9 box method से explain करने की कोशिश की है कि why the world has more competition than actually collaboration। कि इसमें there are 5 out of 9 chances कि whenever a power struggle starts in a society, it will end up in a competition.
जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को टोटली ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान में भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन हैपनिंग बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पावर, एंड both of them want to eliminate the other one. And why in a game of statistics, why it is the most likely scenario. Then the goal of power, कि जब आपने पावर ले ली, आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ? आप सिंपल सिर्फ अपनी जात की तस्कीन चाहते हैं, या do you want to use it to good use? So a sage will always have one of the 6 goals: acquire, merge, transform, turn around, disruption, and innovation. Or ये मैंने without going into the detail, these are the kind of things that over the years we have seen that whenever a sage adopts power, they try to go and do something useful with that power. For example, अगर मैंने मुझे जब पावर मिल गई, तो मैंने जाके उस पावर को क्या उस सोसाइटी को टर्न अराउंड करने की कोशिश की, क्या मैंने उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, या सिर्फ मैंने अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपने 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 आप को अमीर करने के लिए, या अपने लोगों को नवाजने के लिए पावर गेन की थी. And this is the last thing that I've discussed in the book, and I wanted to keep it at the very last because I believe in recency effect, कि इंसान जो आखिर में चीज़ें पढ़ता है उसके दिमाग में ज़्यादा रहती हैं. तो पावर को जब भी हम डील करते हैं, we need to make sure कि who we are empowering. और ये जो डार्क टेट्राइड मॉडल है जो आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं कि जी if someone is a psychopath, narcissist, Machiavellian और sadist, अगर उसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो we should always take away power from them. We should play an active role in taking power away from them. क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, they end up making power corrupt. हम लोग जब भी आप कोई भी एक करप्ट पावर बेस को स्टडी करेंगे, कोई भी एक आदमी जिसने पावर को बड़े बुरे तरीके से यूज किया सोसाइटी में, अब जब भी उनको डिस्कस करेंगे, यू विल कम टू नो दैट they would display one of these 4 evil traits. And on that note, I will invite you guys to ask me questions, and Amjad sir, please let's have a discussion now. Thank you so much. It's very interesting. At least I found it very interesting, and I think it might be very interesting for the audience as well. Well, to begin with, I must say that your wife is a fast reader, like my children. It took me 2 weeks to finish this book. Obviously, not every single hour of the week, but 2 to 3 hours a day. Then I finished it. I think 2 things. This, in a way, meta-narrative, or when you try to build a grand theorization of anything, be it socialism, Marxism, capitalism, Islamism, there are some problems because despite having some archaeological, civilizational evidence, when you begin from prehistory, there are always gaps and are gaping holes in a particular thesis which an author tries to build up. So one thing, and secondly, this modelization that I found, in fact, very, very interesting. I have rarely seen a book with an extensive modelization of the forms of power and the substance of power and the way it is exercised. And one question that I would like to ask, or in a way try to understand, is when you made a reference of Robert Greene's 48 Laws of Power, and you said on Amazon it is perhaps 3rd or 4th most read book, I would not be surprised, because there is a question, and in the 48 Laws of Power, that is Robert Greene, and Machiavelli himself states it very clearly, that when we speak of powers, we do not say, or we do not engage how a power should be exercised, or what a power should ideally be, or what a sage, or how the sage should exercise power. They say this is what power has always been.
This is how the power has always been exercised, and this is how the political personalities or the people in power have been practicing or exercising the power. So there's no question of should or would, but this is what it is. And over there say we are neutral. We are not saying that we are taking any position, we are assuming any position. But this is how it is exercised, or this is how it has been exercised. And another question, if you allow me to ask one more question, when you come to exemplify how a sage or sages, at times you say, selfless and self-sacrificing and who do not care of their survival instinct, etc. And you quote the examples of Afghanistan, Libya and Syria. I think you seriously undermine the role of Western power, the kind of negative role Euro-American powers have been playing, right from Italy that you gave an example of Umar al-Mukhtar, how he opted the trajectory of becoming a sage from a primary school teacher to a guerrilla fighter. I think you, I don't know, deliberately or unconsciously undermine the role of the Western power, and they are still playing this role. You see the case of now Lebanon and then Palestine, and tomorrow you write a book and you undermine it and you say there were certain sages and there were certain Machiavellis, etc. And my last question is that you did mention while in the passing that there is a tug of war or serious political conflict or political crisis. I mean, how to exercise power between three political parties, that is Pakistan People's Party, Muslim League and Pakistan Tehreek-e-Insaf. I would like you to throw a light on that and how you make sense of this situation of power, and how do you modelize, and how would you like to or try to interpret this whole situation. I think after that I will take you straight to the audience so that they have an opportunity to ask questions. Thank you so much. सही so to start off जो आपने तीसरा सवाल पूछा, I will start with that कि जी why I've undermined the role of the Western world. So I think when in the book when I'm talking about the Syria model, I'm talking about what the Western world was doing. So I'm conceding that the Western world had a part to play in it. Secondly, I do not endorse what Western world has been doing, and I've been very vocal. So I live in Luxembourg. Every Saturday, I am on the roads doing activism, especially in favor of Palestinians. Actually, even last week, there was a protest, and I was delivering a speech. So I do concede that the Western world has played a very negative role. And when I gave the example of Henry Kissinger ने जो कुछ दुनिया के साथ किया है, उसकी जो legacy है, वो is that of a prince. The role, the kind of things that he has done to upstage democratic entities in South America and in other parts of the world. That is there are books and volumes written of it. अब unfortunately जो prince के साथ होता ये है कि वो उस वक्त तो बड़ा कामयाब होता है, लोग उसकी बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन a generation or two past जहाँ के उसके बाद फिर प्रिंस को जाना बड़ा गलती और उनको बताया जाता है कि आपकी लेगेसी कितनी बर्बाद हुई थी. तो वेस्टर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम ये है कि अभी एक बहुत बड़ा बायस जो है वो है नैरेटिव बिल्डिंग का, जहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में नैरेटिव बिल्डिंग है. मैं यूरोप में रहता हूँ, आज भी जब भी वो फ़लस्तीन और आजकल जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, दिस draw a line and say let's start after October 7, let's forget whatever happened before October 7. और इसी वजह से जब मैं कह रहा था दुनिया में कोई भी चीज़ जब आपने देखनी होती है, आप लाइन ड्रॉ करके उससे आगे नहीं देखते, आपको चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखनी होती है, क्योंकि October 7 happened not in one day. It took 70 odd years to reach October 7. How I am tackling that now in this book, I've definitely not tackled the hypocrisy of the Western world. But in the next book, which I'm currently writing, which is called A Splash of Ideologies, where I'm disputing the hypothesis given by Samuel Huntington, a clash of civilization hoti hai. I am disputing that hypothesis, and I'm saying the clashes never happen between civilizations. Clashes always happen between ideologies. For example, America, UK, both were the same civilization, yet there was a war of independence between the two.
North Korea, South Korea, same civilization, same language, still they are clashing with each other. India and Pakistan, same civilization, yet look at that there is a border between us. So उस बुक में मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड आई एम टेकिंग और जो लाइन मैंने जो स्टोरी लाइन लिखी हुई है वो ये है कि जो सेजेस होते हैं they have an ideology. That ideology takes root in the society and then it just keeps on multiplying until a time comes where that ideology starts toppling the status quo. For example, Europe जो है has become socialist all across. यहाँ पे सवाई यूके या नेदरलैंड्स अप टू एन एक्सटेंट और स्विट्जरलैंड टू एन एक्सटेंट यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत कम नजर आता है आपको सब सिर्फ सोशलिस्ट नजर आता है और इसकी वजह क्या थी कि सोशलिज्म की जो स्ट्रगल थी वो काफी लंबी चली है यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम कार्ल मार्क्स और उसके बाद फिर हर कंट्री में एक 1848 में रेवोल्यूशन आया फिर 1905 में रशिया में रेवोल्यूशन आया फिर 1990 में दोबारा रेवोल्यूशन आया जर्मनी प्रूशिया इटली वगैरह इन सब में तो एक स्ट्रगल चली तो यहाँ पे भी अभी जो नैरेटिव बिल्डिंग और वो जो आइडियोलॉजी है कि जी जहाँ और आइडियोलॉजी ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है वही सिर्फ सही है और जिसको वो आजकल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं आई थिंक दैट इज ऑन द वे डाउन क्योंकि अगर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज द आइडियोलॉजी देन हाउ वुड यू से कि जी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो गलत है और फलस्तीन में जो हो रहा है वो सही हो रहा है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वुड से कि अगर यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत है तो फिर फलस्तीन के साथ भी गलत हो रहा है unfortunately that is not happening but I'm going to tackle this issue in my second book obviously since I live in Europe I'm going to criticize the European foreign powers and it is only possible because they give me the liberty to criticize them for example मैं पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के सामने खड़े होके उनकी हिपोक्रेसी के बारे में बात कर रहा था it gives them the liberty तो यूरोप में हम लोग when we do that we also have to appreciate that they give the liberty and the freedom for you to go and speak and tell and expose their hypocrisy आपका सॉरी अब बाकी क्योंकि मैंने जवाब इसका बहुत लंबा दे दिया मैं अगला सवाल भूल गया I think we should also allow the audience to ask questions then it's somewhere in between you can relate what I asked okay how do you look at the political crisis in Pakistan right now political crisis okay so I think let's get questions from audience अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 4 पावर की आइडियोलॉजीज़ की बात की ठीक है तो उसमें आपने सेज की बात की और मुझे जो एसेंशियल डिफरेंस लगा सेज में और बाकी जो पावर की आइडियोलॉजीज़ थी उसमें ये था कि सेज में आपने एथिक्स और मोरालिटी की बात की तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एथिक्स और मोरालिटी बेसिकली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है हर बंदे की अलग मोरालिटी है और सब कुछ है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे मोरालिटी को और जो सेज होगा वो कैसे डिफ़ाइन करेगा मोरालिटी को और बेसिकली ये जो पावर की आपने आइडियोलॉजी दी ये कैसे प्रैक्टिकल है और अगर आप कोई इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दें तो वो भी सही होगा thank you I think let's take at least 2 questions then we will request the speaker to answer और कोई सवाल any other question चलो जी वकास तो इसमें सॉरी स्पीकिंग go ahead please हाँ तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल तो सेज की मेरे ख्याल में नेल्सन मंडेला इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल महात्मा गांधी इज अनदर एग्जाम्पल उमर अल मुख्तार इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दीज वर द काइंड ऑफ गाइज हु अडॉप्टेड एन आइडियोलॉजी अब नेल्सन मंडेला जैसे ही सेड कि जी सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए ब्लैक इज नो डिफरेंट देन अ वाइट पर्सन इन साउथ अफ्रीका और उसके लिए उसे जो कुछ करना पड़ा मसलन एएनसी वेंट ऑन ए टेररिस्ट कैंपेन उन्होंने सबोटाज करना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और उसके बाद जिसकी वजह से फिर वो जेल में भी गए नेल्सन मंडेला और फिर निकले उन्होंने स्टिल द वेरी फर्स्ट थिंग ही डिड वाज गिव अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट वेल यानी कि वेल डॉक्यूमेंटेड कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आज जितने भी ज्यूरिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि जी द बेस्ट वे टू एक्चुअली फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द साउथ अफ्रीकन मॉडल द गाय स्टूड ऑन एन आइडियोलॉजी एंड देन whatever it required to execute that ideology did that so Nelson Mandela Umar al-Mukhtar is another example who was very much anti-imperial rule. तो जब Italians जब लीबिया में आए, Umar al-Mukhtar was the guy who was a school teacher, stood against them, kept on fighting, पकड़े गए, उनको कहा कि
काफ़ी कुछ कहा कि जी आप ले लें और उसके बाद सिट डाउन. He did not do a compromise. He stuck to his ideology even when he was going to be hanged. The only thing that he said, free Libya and get out of my country. He still stood on his ideology. तो there are many examples जो कि ideology पे खड़े रहे हैं और principled लोग हैं. और मैं I can go on and on. अब आपने जो बात बोली ना कि जी ethics and morality are subjective. This is perfectly, I mean, this is very good thing that you actually highlighted, and I've discussed that in the book as well. कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स और मोरालिटी हैं वो जमाने के साथ और दुनिया के साथ चेंज होते रहते हैं. मसलन आज अगर जंग होती है और प्रिजनर ऑफ वॉर को आप मार देते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अनएथिकल. लेकिन जापान में इट इज़ वेरी राइट. आप अगर प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वहाँ पे मारना जो है वो उनके कल्चर का हिस्सा है. आई थिंक इट इज़ कॉल्ड एज हारिकेरी. उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर की गर्दन उड़ा देते हैं और वो उनके लिए एक ऑनरेबल डेथ कहलाई जाती है. तो ये बातें डेफिनेटली एथिक्स और मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं. लेकिन जब आप भी किसी चीज़ को जायजा लेंगे तो आप फिर बोलेंगे कि उस जमाने के एथिक्स एंड मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या थे, क्या वो उसको कॉम्प्लाई करता था या नहीं. और दूसरे नंबर पे होता यह है कि क्या वो आदमी जो है या जो भी लीडर है वो अपनी जो पावर बेस है वो अथॉरिटी से डिराइव कर रहा है या इन्फ्लुएंस से डिराइव कर रहा है. कि अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि उसको आपने इस तरह की ताकत दी हुई है कि वो, फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन पावर को आप इस तरह समझें कि आपसे मुझे 5,000 रुपया चाहिए और मेरे हाथ में गन है और मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे 5,000 रुपया दें, तो आप फोर्स होंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू शूट यू, अदरवाइज यू आर गोना गिव मी दैट 5,000. लेकिन अगर मैं आपके पास आता हूँ, सर कैन आई हैव 5,000 रुपीज फॉर यू फ्रॉम यू बिकॉज आई रियली नीड दैट एंड यू गिव मी दैट इज इन्फ्लुएंस. तो जब भी आप किसी भी लीडर की लेगेसी को गेज करेंगे तो आपने एथिक्स एंड मोरालिटी उस जमाने के गेज करने कि उस जमाने में क्या हो रहा है. एंड दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि उसकी जो पावर बेस थी वो इन्फ्लुएंस से ड्राइव थी या अथॉरिटी से ड्राइव थी. और बेस्ड ऑन दैट यू विल जज देयर लेगेसी. एंड इफ दे फेल बोथ ऑफ देम, फॉर एग्जांपल जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो हिटलर है, ही वाज यूजुअली पॉपुलर गाय. अगर आप उसकी जिंदगी के पहले अवाइल देखें, वो आइडियोलॉजी अल्ट्रा जर्मन नेशनलिज्म पे बिलीव रखता था, उस आइडियोलॉजी पे स्टिक करता रहा. उसकी जो लाइफ की जो इनिशियल ट्रेजेक्टरी है वो बिल्कुल सेज के जो मॉडल मैंने दिया हुआ है उस पर वो कंप्लाई करता है. लेकिन जिस तरह वो बढ़ता गया, जब उसको पावरफुल हो गया, तो उसके बाद उसने फिर जो डार्क टेट्रेड मॉडल है उसमें जो सैडिज्म है उसको अडॉप्ट कर लिया. एंड दैट इज व्हाई इट नलिफाइज हिज लेगेसी कि ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेज, ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दैट ब्रैकेट. तो इसी तरह इसी बेसिस पे आपने लोगों को जज करना है और देखना है कि वो कहाँ पे कैसे कंप्लाई कर रहे हैं. और while someone might be thinking it as a very populist guy say, जो कि populist होता है, लोग उसकी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि वो populist होगा या नहीं होगा. There are many sages in the world who are not populist as well. They may or may not be, but populism को वैसे भी मेरे ख्याल में हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो बड़े नैरो वे में एनालाइज करते हैं. पॉपुलिज्म इज नॉट बैड. आई मीन इट इज नॉट, आई मीन लोग जब भी पॉपुलिज्म को बोलते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है. मेरे ख्याल में सिर्फ गलत नहीं होता, इट हैज इट्स ओन फ्लेवर, इट हैज नो आंसर्स अटैच्ड टू इट. तो वापस क्वेश्चन पे कि we should always look at people, what their legacy is based on, the sources of power they have, and number two, what are the standards of ethics and morality at that point. And based on that, now going back to the question that Amjad sir, you asked about PMLN, People's Party, and PTI. I think we have to look at how these three big political parties actually developed their power base. I think everyone knows they came on the back of establishment. हर किसी ने अपने टाइम पे, पीपल्स पार्टी ने 1950s और 60s में, PMLN ने 80s में, PTI ने 2010s में, सब ने एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और all of them went away. अब is it necessarily a bad thing कि आप शुरू से आइडियोलॉजी अपना के रखें और उसके बाद आप बोलें कि जी अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता और अब मैं एक डिफरेंट डगर पे जा रहा हूँ, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता. मसलन आंग सान सूची जो कि म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आप लाइफ देखें. जब कू हुआ 1964 में म्यांमार में, सो शी वेंट अवे, शी लेफ्ट म्यांमार, सेल्फ इम्पोज एग्जाइल पे चली गई, और फिर शी डिड नॉट कम टू म्यांमार अप अंटिल आई थिंक 1988.
जिसको 888 अपराइजिंग बोलते हैं, उस वक्त शी केम इन और फिर उन्होंने कहा कि जी अब मैं म्यांमार को लीड करूंगी. एंड यू कैन सी कि जी शुरू में शी वाज वेरी प्रैग्मेटिक एंड देन आफ्टर 1988 शी बिकेम अ वेरी आइडियोलॉजिकल. और फिर वो आइडियोलॉजी पे खड़ी नहीं, वो उनको घर नजरबंद कर दिया, जेल में रही. But she kept on believing कि जी democracy is the way forward and army should go back. And up until I think 2013 आप देखें तो उनके बयानात सुने आपको नजर आता है कि she remained an ideological. And then when she became prime minister or her party came to the power and army went back to the barracks, you see a sudden shift in her. जहाँ पे वो फिर दोबारा pragmatic हो गई. आर्मी जब वो रोहिंग्या के लोगों को मार रही थी, she did not say even a single word. And now again when she is ousted, now you see कि उनके बयानात. तो इंसान जो होता है वो कभी भी एक स्पेसिफिक मॉडल पे बिलीव नहीं, एक स्पेसिफिक एक प्रिडिक्टेबल पाथ पे नहीं रहता. इंसान चेंज होता रहता है. और सिमिलरली पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, जब आप इनको देखते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू रिमेन ट्रू टू वन थिंग. इंसान हमेशा नुआंसेस शो करेगा. कोई भी बंदा 100% सेज नहीं हो सकता, कोई भी बंदा 100% प्रिंस नहीं हो सकता. दे विल बी लाइक 50-60% टाइम दे विल बी लाइक सेज, 30% प्रिंस, 10 टाइम्स उबर बंच. तो ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो भी आपको इसी तरह नुआंसेस में नजर आता है. अभी आजकल जिस तरह आप अगर मैं 2024 का एनालाइज करूंगा तो आपको नजर आएगा कि सेज इज मोर अ पीटीआई, पीपल्स पार्टी इज मोर ऑफ ए प्रिंस, कि वो हर किसी के साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रही है. पीएमएलएन दे शो शेड्स ऑफ उबर मंच एंड प्रिंस. नो वन इज अ फिलोसोफर किंग हियर. लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आई थिंक ओनली द टाइम विल टेल. ऑब्वियसली आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग थिंग्स. हाउएवर, एज ऑफ नाउ you see a battle between Prince, Ubermunch, and Sage. Or with talking about these political parties, I think the elephant in the room is the establishment. We cannot really predict the path of these political parties unless we talk about the establishment as well. Or establishment ka jo power model, it is totally based on Ubermunch. They believe that they know everything and what they say is the truth, and they are the best judges of standards, and whatever they tell to Pakistanis should be the reality. और ये ऐसे जो लोग होते हैं उनका मसला यही होता है कि if they go on the wrong alley, then you cannot bring them back. और unfortunately हमारी जो establishment है उसके साथ जो मैं एनालाइज करता हूँ, उनके साथ यही हुआ है कि they have gone on a path जहाँ पे उनको ये बताना कि आप लोग गलत पाथ पे चले गए हैं, ये मुश्किल होता जा रहा है. और जब आप establishment को देखते हैं, उन्होंने जो पावर अपनी जो accumulate की थी, it was not necessarily based on I think sufficient, Waqas sir. We should move ahead. On a lighter note, I think Bilawal Bhutto might be defined as a philosopher king. Anyway. I would dispute this. Definitely, you have every right to dispute it. Anyway, any other question? Sir. Keep it short, please, and I will also request keep the answer short. Thank you. So my question is, how would you describe the position of power held by an average citizen of this country, a normal person like me and everyone else sitting here? And apart from that, how would you recommend a person should exercise agency and power, a normal person? How should he do that in the current status quo? So this normal is quote unquote. Yeah, so I think how the quantum of power that you have is based on how much level of independence you contain in yourself. होता ये कि हम सबकी needs का एक level होता है. हमारी जो needs होती हैं वो अपनी needs का भी हम अपने साथ अपने लिए खुद fulfill कर सकते हैं. कभी कोई बंदा आके external party हमारी वो needs fulfill कर रहा होता है. मसलन let's imagine a village, एक गांव है जहाँ पे मैं चौधरी हूँ और आप एक वहाँ पे मज़ारे हैं जहाँ पे आपने अपनी लेबर मुझे देनी है. आपकी नीड है कि मुझे अनाज चाहिए और मेरी नीड है कि मुझे लेबर चाहिए. आप मेरी नीड फुलफिल करेंगे लेबर देके और मैं आपकी नीड फुलफिल कर दूंगा आपको अनाज देके. बट लेट्स से कि आप अकेले नहीं हैं और 10 और आपके जैसे हैं जो अपनी लेबर दे सकते हैं. तो व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड पिट द लेबर्स अगेंस्ट ईच अदर. आई वुड से कि जी मुझे एक लेबर की जरूरत है और यहाँ पे 10 और आप सबको अनाज 10 बंदों के अनाज की जरूरत है.
तो आपकी जो नीड है उसको मैं एक्सप्लॉइट करूंगा एंड आई विल फुलफिल योर नीड्स, देन आई विल ऑल्सो हैव अ पावर डेल्टा ओवर यू। तो जब भी एक इंसान को आपने देखना होता है कि उसके पास कितनी पावर है और कितनी पावर नहीं है, आपने ये देखना होता है कि उसकी कितनी नीड्स हैं और वो नीड्स कौन फुलफिल कर रहा है। आप यू आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, आपकी नीड्स क्या है कि मुझे खाने के लिए रोटी मिल जाए, मेरे सर पे छत हो। इफ यू कैन फुलफिल, अगर आप अपना कमा के खा सकते हैं तो अपना यानी कि उगा के खा सकते हैं, तो देन यू डू नॉट नीड। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करें, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट कंपनी टू फुलफिल दैट नीड ऑफ गिविंग यू द मनी थ्रू विच यू कैन बाय फूड। इन दैट केस यू आर गिविंग पावर टू दैट कॉर्पोरेशन। सिमिलरली अगर आप छत है, अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं, तो आप यूर गिविंग पावर टू ए मालिक मकान। जो लैंडलॉर्ड होगा उसको आप पावर दे रहे हैं क्योंकि ही कैन एविक्ट यू आउट एनी टाइम ही वांट्स। आई एम अज्यूमिंग देयर आर नो लॉज इन पाकिस्तान। तो आपने ये, कोई भी एक इंसान ने अगर अपने लाइफ का एनालिसिस करना है कि मैं कितना पावरफुल हूँ कितना पावरफुल नहीं हूँ, जस्ट लुक एट योर नीड्स एंड हु इज फुलफिलिंग दैट नीड। एक बच्चा जो होता है वो माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन माँ बाप, दैट किड गिव्स पावर टू दैट पर्सन। अब पाकिस्तान में एक आम इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि जितना पावर का मसाइल जितने पाकिस्तान में चल रहे हैं, आई थिंक व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी कौन कौन सी जो नीड है, जो डेस्परेट नीड्स हैं, जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। और अगर नहीं हो रही हैं, इसके बावजूद कोई बंदा आपके ऊपर सवार है, तो यू गाइस नीड टू take that power away, क्योंकि it doesn't make sense to give power to someone who does not give you or does not fulfill your need. That is the power equation. There are a couple of other questions. I think we should provide them an opportunity. Acha, chale. It's okay. We will take both the questions, then we'll ask for the answers. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने शुरू में बात की कि जो वर्ड पावर है उसको हम नेगेटिव वे में कंसीव करते हैं। तो सर अगर देखा जाए साइकोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है, स्टडीज़ हो चुकी हैं, तो जिसके पास भी पावर आती है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको नेगेटिव वे में कंसीव करते हैं? क्योंकि आपके पास एग्जाम्पशंस होंगी, ठीक है, आप कहेंगे कि उस बंदे ने यूज़ नहीं किया, उसने यूज़ नहीं किया, बट जब भी हम कोई भी पर्सपेक्टिव देते हैं मेजॉरिटी को देख के देखते हैं। तो मेजॉरिटी में तो हमेशा यही होता है कि जिसके पास पावर आती है उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो उस वे में तो एक वर्ड की जो परसेप्शन बनती है वो नेगेटिव ही बनती है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? Okay. Another question from here, madam. Thank you for the interesting talk. Just wanted to ask you कि जो आपने कहा है कि अगर जो है पावर जिसके पास है that person is a narcissist या जो है कोई like you know is has some psychological issues, जो how do you take that power away? What kind of power do you need to take away power from a narcissist? Okay, thank you. I think Waqas sir, just 1 minute. I'll make one comment and then we will conclude it with your answer. You made an interesting point earlier that transition or transformation from a non-violent modality of power, from a violent modality of power to a non-violent modality of power, or from a prince that is a tyrant to a sage who is ideologically driven is very much possible. I was just thinking that in our case it's Ashoka is an example, then King Akbar or Akbar the Great might be an example, and you have already quoted the example of ANC, that is Nelson Mandela's struggle against apartheid regime. And let me add that even Mahatma Gandhi, who was in 1880s or 1890s when he used to live in South Africa, he favored Zulu War and Boer War and to some extent World War I and to some extent World War II as well. So you made a point that transformation or transition from one position or one form of power to another form of power is also possible. So brief answer to all these questions so that we can conclude. We have already consumed a sufficient amount of time. Thank you so much. So answering the first question first, जब आप ये कहते हैं कि more or less हमें ज़्यादातर लोग जो पावर लेते हैं वो evil होते हैं, I would actually dispute that.
the number of people in the world who have power is immense, and those people who actually use power to their advantage is still a minority, it is not majority. होता ये कि क्योंकि वो जब नेगेटिव रोल में यूज करते हैं तो उनकी ऊपर उनको एनालाइज बहुत ज्यादा किया जाता है। मसलन हिटलर, उसको बहुत ज्यादा एनालाइज किया, बट and to be fair, Hitler was not the first one who killed so many people. There are like King Leopold जो कि बेल्जियम का था, he killed in millions as well. लेकिन क्या पूरी जर्मनी की हिस्ट्री में एक हिटलर आया, लेकिन बाकी जर्मनी की हिस्ट्री में इस तरह का कोई बंदा नहीं आया? तो आई वुड एक्चुअली डिस्प्यूट कि जी आपका जो स्टैटिस्टिक्स हैं, प्रोबेबली इट इज द अदर वे अराउंड, वेयर देयर आर मोर पीपल हु हैव पावर हु हैव नॉट यूज्ड इट। और बाकी पावर एक्सप्लॉइट करना, आई डोंट थिंक सो, नॉट एवरीवन एक्सप्लॉइट्स इट। ये जो अभी अमजद साहब ने जो इतनी एग्जांपल्स दी हैं, पीपल डू नॉट, दे हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड द पावर दैट यू फील। इट इज वेरी मच अप टू द पीपल। और यही वजह मैंने शुरू में जो बात की कि इट इज नॉट power which corrupts people, it is people who corrupt power. So you need to be very careful of who are you empowering. If you are empowering a narcissist, a sadist, then obviously they will come with the repercussion. Now moving to the second question कि जो evil लोग होते हैं उनको हटाया किस तरह जाता है, तो it is not only the narcissist, it is psychopaths, Machiavellians and sadists. जो डार्क टेट्रेड मॉडल है उसमें 4 कैरेक्टर ट्रेट्स आते हैं, और उनमें से कोई भी बंदा अगर पावरफुल हो गया है और आपने गलती से उनके ट्रेड्स, उनकी साइकोलॉजी जानने में वो गलती कर दी और दे हैव नाउ टेकन ओवर द सोसाइटी, then the best way forward is to enable a sage in the society, because the sage is an ideologue. और वो जब आइडियोलॉजी पे खड़ा होता है तो वो it starts accumulating and it does not happen overnight. It takes time. कि आप कोई भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जब देखते हैं, it does not take weeks or months, it takes years. पहला एक सेज आएगा जिसको बुरे तरीके से वो पिटेगा, हारेगा और बाहर हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। फिर दूसरा सेज आएगा, वो पिछले वाले सेज से लीड लेगा। अब जैसे पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस नॉन इस्टेब्लिशमेंट की एक पूरी लड़ाई चल रही है, आप वो देखेंगे कि इट्स जो आजकल की जो लड़ाई चल रही है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, इट हैज हैपेंड बिफोर दैट एज वेल। तो होगा ये कि over time it happens कि एक sage ऐसा निकलेगा which will break through the defense line and then will break the status quo. So it does happen. The society has time and again told us, जो societal history है वो हमें बताती है कि it is always the sage who break through और वो फिर जो status quo होता है उसको बुरे तरीके से तोड़ते हैं, but it does not happen just like that. It takes time. और एक सेज दूसरे को एम्पावर करता है, दूसरा तीसरे को एम्पावर करता है, तीसरा चौथे को करता है, then a lot of sages just come together and then make it happen. Yeah, that's pretty much it. Thank you so much. Thank you the audience, and thank you Waqas Awan Sahab. It has been very interesting discussion. Khuda Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.